Assalamualaikum everyone. Thank you very much for joining the Executive MBA counseling session. My name is Aisha Khan and I am from the Suleiman Daud School of Business Communications Department. Joining me here today is my team, Shariar Khavar Latif, Ali Arshad, Asfand, and Rizwan from the Admissions and Financial Aid team of LUMS. And of course, Dr. Ghulam Ali Arain, he is the Program Director of the Executive MBA. This session is about any queries that you may have about the Executive MBA program, and we will start with a brief introduction of Dr. Ryan, followed by a very brief commentary on the Executive MBA program, and then we will open the floor for questions because the main aim of this session is for you to be able to connect with the program director and also with our admissions and financial aid team for any queries regarding your applications. Thank you very much, Dr. Ryan, for your time. And may I request you to just introduce yourself and give a brief overview of the Executive MBA program to our audience. Okay, thank you so much, Aisha and the team. On behalf of the program of Executive MBA and Suleiman Daud School of Business, I welcome you all the participants, and I'm glad that over 50 participants have registered, and I can see many of them they are present. As far as this Executive MBA program is concerned, it is precisely of 22 months or roughly of 2 years program. This is one of the flagship programs of Suleiman Daud School of Business, Lahore University of Management Sciences. If you ask me the specific about its international standing in terms of the ranking, it currently stands among top 120 best business programs with respect to Executive MBA internationally or globally. And if we compare this in the South Asian region, then our Executive MBA program stands at the 14th ranking or range. And as a whole, Suleiman Daud School of Business is internationally accredited by the world's best accreditations, including AACSB. This year, or perhaps the last year, we got re-accredited status, the only business university or institute in Pakistan that got this prestige. So along with this, if you join Executive MBA program, there are many interesting elements or characteristics of our program. For example, this is a weekend-based program, so ideally suited for mid-career executives, those who are in the middle stage of their career and they want to switch to another organization for better designation and more responsibility, or even if you want to basically move within the same organization, same industry, then this program is designed for you. It will help you to improve your leadership skills, particularly if you want to be the part of C-suite boardroom by taking some, CHRO or any C-suite designation with a higher set of responsibilities, then this program is for you. And as I earlier mentioned, this is a weekend-based program, so you don't need to basically quit your job. You can do this, degree along with your job. So ideally, you need to come on alternate weekend for Saturday and Sunday. There might be some Fridays included in the program, and the program offers you very interesting, pedagogy, that is case-based teaching. And then we have a kind of globalization module. Under that module, our participants, they go to the US Silicon Valley for 1 week, and they witness and experience a kind of, hands-on managerial insights from those high-tech industries in the US Silicon Valley. And those who cannot go there due to financial constraints or visa issues, we have a parallel module. We call it a domestic module. And under that module, participants usually go for 1 week to Karachi, and during that 5 to 6 days visit, they visit more than 10 to 12 different organizations, and practically, and they witness the functioning of different areas in those organizations. So there are 5 modules. The first 3 modules you cover in the first year, and then
The last two modules are covered in the second year, followed by a project presentation. So this is a kind of brief overview of our executive MBA program. I'll be open for taking questions for more clarity for this program. Aisha? Thank you very much, Dr. Nine. Please, you can please use the raise hand option and I will just call upon you. And alternately, you can also type your question in the chat. Sohail Afzal, can you please unmute yourself and ask your question? अस्सलाम वालेकुम गुलाम साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? Walaikum salam. I'm fine, जी, Sohail. How about you? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद सुहेल अफजल है और मैं लास्ट सेशन में भी था एमबीए के, आयशा, इफ शी रिमेम्बर्स। इशू ये है कि मैंने एक चीज़ कंफर्मेशन लेनी है ताकि उससे आगे मैं प्रोसीड कर सकूं। आई एम अ मेंबर ऑफ आई कैप, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान। मेरा पोस्ट आर्टिकल एक्सपीरियंस इज ऑलमोस्ट 9 years. I've done 4 years of articles from Nexia International, and I'm not a graduate. But ICAP has signed MOU with HEC and Actis UK, which grants 16 years of equivalence education. Is it sufficient to get enrolled in EMBA on the basis of this 16 years exemption or equivalence? I think Ali Arshad can answer this question better, but as per my understanding, if you have HEC's 16 years equivalent certificate, then you are eligible for this program. Ali Arshad, maybe you can guide Sohail. श्योर श्योर श्योर। सर साहब, हमारी इसमें पहले वो डिस्कशन हुई थी, आपको इंडिविजुअल आपके केस के लिए इक्वलेंस चाहिए होगी। जिस इक्वलेंस की आप बात कर रहे हैं ना, वो जेनेरिक इक्वलेंस है जो जी आई कैप को, एसीसीए को, सीए हम्म, एप्लीकेंट्स को मिली हुई है। वो जी इक्वलेंस जी की एक जेनेरिक है। जी जी जिस केस की बात कर रहे हैं, आपकी एक हायर सेकेंडरी लेवल की डिग्री नहीं है, जहां तक मुझे जी याद है आपका केस। जी जी श्योर। तो हाँ, इस केस के अंदर आपको इंडिविजुअल आपके लेवल पे एचईसी से इक्वलेंस लेनी पड़ेगी। अच्छा, एक चीज मैं बड़ा क्लियरली मेंशन कर दूं, मैंने अपने इंस्टीट्यूट को तो लिखा है, दे विल रिस्पॉन्ड ऑन इट। लेकिन जो एचईसी का नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन के अंदर इटसेल्फ ये लिखा हुआ है कि मैं इंडिविजुअल सर्टिफिकेट्स इशू नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन आपको मेंबरशिप इशू हुई हुई है। जी जी बिल्कुल हुई हुई है। ठीक है, आप एडमिशन एट लम्स पे अपनी सारी ट्रांसक्रिप्ट्स मेरे साथ शेयर करें। मैं इसको नहीं, मैं एवेलुएट मेरा करके सवाल आपको आपसे दोबारा लाइव बताऊँ। पूछने का ये है कि मेरे पास हम्म हम्म इंफॉर्मेशन आ जाए। मैंने लम्स को एडमिशन्स के ऊपर जो आपने ईमेल एड्रेस दिया था उसके ऊपर ईमेल भी की है। एंड दिस, हम्म हम्म, जब मैंने उन्हें सर्टिफिकेट साथ में अटैच करके ईमेल्स कर दी, सारी डिस्क्रिप्शन भी हम्म। लिख दी, उसके बाद अब वो कहते हैं कि आप अपना प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड बताएं कि वो आपने जो है इसी वो वजह से ही कह इंटरमीडिएट रहे हैं। कहाँ से किया हो, मैट्रिक। द इशू इज द हाँ। क्वेश्चन दैट वाज बीइंग आस्क्ड कि क्या एनरोलमेंट के लिए तो ग्रेजुएशन इंपॉर्टेंट है ना। मेरा प्रीवियस रिकॉर्ड तो मैं नहीं रखता, वो मैं भेज दूंगा, वो अभी आज ही मुझे ईमेल आई है, मुझे उसमें भी कोई इशू नहीं है। लेकिन हम्म। जो क्वेश्चन पूछा गया वो तो वहीं पे ही आंसर कर देना चाहिए ना। तो सर, वो तो फिर मैंने आपको पिछले ही सेशन में बता दिया था कि इंडिविजुअल इक्वलेंस आपको चाहिए होगी। फाइन, अगर अगर मेरा इंस्टीट्यूट मुझे इंडिविजुअल इक्विवेलेंस प्रोवाइड करवा देता है जीसी से या एक्टिस यूके से, एक्टिस यूके भी चलेगा या सिर्फ एचईसी से ही चाहिए? सिर्फ एचईसी, एचईसी। आपको जो एचईसी डिग्री फाइन। शो हो रही है वो एचईसी रिकॉग्नाइज्ड है। हम लोग एचईसी को ही कंसिडर करेंगे। फाइन, अगर एचईसी से इंडिविजुअल सर्टिफिकेट मिल जाता है देन इट इज फाइन, अदरवाइज इट इज नॉट फाइन। बिल्कुल बिल्कुल, इसका प्रोसेस ये होगा हाँ, कि आप एप्लीकेशन अपनी सबमिट करेंगे विद इन टाइमलाइन। ठीक है। ठीक है 14 अप्रैल तक एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, 15 तक डॉक्यूमेंट देंगे, और जिस तरह टेस्ट है वो भी आप अपेयर करेंगे, ताकि ठीक आपका है पूरा साल ना वेस्ट हो। मीनवाइल आप अभी अपना प्रोसेस इनिशिएट कर दें, क्योंकि एचईसी तकरीबन 1 महीना ले लेता है, ताकि जब तक ठीक हम है। लोगों के इंटरव्यू स्टार्ट होने तब तक आपके पास कोई डिसीजन आ जाए। जी। फाइन सर, बंडल ऑफ थैंक्स सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you. Thank you, Ali Arshad. Ibrar Ahmed Khan, can you please unmute yourself and ask your question? जी अस्सलाम वालेकुम। आई एम अबरार अहमद खान, वर्किंग एज एरिया ऑपरेशंस एंड कंप्लायंस ऑफिसर इन बैंक इस्लामी एज असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट। मेरा क्वेश्चन है मैम कि मैंने जिस वक्त जॉब स्टार्ट की थी 2006 में, उस वक्त मैंने बीकॉम किया था। उस टाइम 2 साल का बीकॉम होता था। उसके बाद मैंने मास्टर्स किया इकोनॉमिक्स में एज एक्सटर्नल स्टूडेंट, यानी प्राइवेट किया था। ये मेरा एक पार्ट वन है कि क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ। नंबर टू, मुझे इसकी जो फी है और इसका जो टेस्ट का तरीकाकार है वो काइंडली गाइड कर दें। थैंक यू। जी, आई थिंक ये भी हमारी एडमिशन्स और जी,
एडमिशन्स की टीम ही रिस्पॉन्ड करेगी। अली और कैन यू श्योर रिस्पॉन्ड? श्योर श्योर। अच्छा इब्रार साहब, 16 ईयर्स तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर 2 ईयर्स बैचलर्स के साथ अगर 2 ईयर्स मास्टर्स भी होता तो आपके 16 ईयर्स कंप्लीट हो जाते। तो या 4 ईयर्स बैचलर्स होता तब भी 16 ईयर्स की कंप्लीशन हो जाती है। तो 16 ईयर्स तो मैंडेटरी है और ये एचईसी की कंपलसरी रिक्वायरमेंट है। सेकेंडली अगर टेस्ट की बात कर ले तो 4 ऑप्शन सर है, मैंने जी मैट। मैंने मास्टर्स किया हुआ इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो फिर इकोनॉमिकली इशू कहाँ पे आ रहा है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो मैंने किया लाइव नहीं किया था, यानी ऑन कैंपस नहीं किया था, प्राइवेट किया था, क्या वो एक्सेप्टेबल इशू तो नहीं है उसका कोई? नहीं नहीं, इशू नहीं है। आपको पंजाब यूनिवर्सिटी ने डिग्री इशू की होगी ना? नो, मैं उस वक्त कराची था, मैंने शाह अब्दुल लतीफ बिटा यूनिवर्सिटी से एमए इकोनॉमिक्स किया था। ठीक है, आप अप्लाई तो कर सकते हैं, उसमें मसला नहीं है, लेकिन इन लॉन्गर रन आपको इक्वलेंस चाहिए होगी। इक्वलेंस बल्कि अटेस्टेशन कहना चाहिए, इक्वलेंस नहीं कहना चाहिए इसको। लेकिन आप वो तो एलिजिबल हैं, सर मैं आप जॉब अप्लाई कर वो सकते तो वो तो मैं आई एम डूइंग प्रोफेशनल जॉब, वो तो जाहिर सी बात प्रॉपर अटेस्टेशन है, वो तो हर जॉब के अंदर उसकी वो वेरिफिकेशन हर चीज अवेलेबल होती है, वो तो करती है अच्छा अबरार, हर ऑर्गेनाइजेशन। if I jump into this, when did you do your masters? जो कि आप इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, मास्टर्स की कब किया था आपने? 2010 2006 में सर मैंने बीकॉम किया था। उसके बाद ओके। मैं कराची शिफ्ट हो गया था, जॉब मैं करने लग गया था वहां पे बैंक अल्फला में। और 2010 में मैंने पार्ट ये कंप्लीट किया था एम इकोनॉमिक्स 2010 ठीक में है, सर। ठीक है, क्योंकि जनरली वी कंसिडर मिनिमम 6 years ऑफ जॉब एक्सपीरियंस आफ्टर योर ग्रेजुएशन डिग्री। उस सूरत में भी आपका 6 years का जॉब एक्सपीरियंस से अबव है, तो मेरे ख्याल में यू आर फाइन, यू कैन अप्लाई। ओके सर, मुझे अब जरा टेस्ट का काइंडली और जो इसकी जो अमाउंट है कितनी है 2 साल की टोटल, वो काइंडली गाइड कर दें। ओके अली अरशद, प्लीज टेस्ट पे जरा गाइड कर दें इन्हें। जी श्योर इब्रार। 4 ऑप्शंस है आपके पास, जी मैट, जीआरई, एनटीएस गैट जनरल और एलगैट। आउट ऑफ 4 कोई एक टेस्ट आपको देना है। एलगैट बेसिकली लम्स का अपना टेस्ट है, 26 अप्रैल को हम लोग वो कंडक्ट कर रहे हैं। लेकिन क्लैरिटी आपको मैं ये दे दूं कि 14 अप्रैल हमारी एप्लीकेशन सबमिशन डेडलाइन है। तो 14 तक ही आपने अपनी एप्लीकेशन फाइल करनी है। और अगर आप एलगैट के लिए पेयर हो रहे हैं तो टेस्ट सेक्शन में आप मेंशन कर देंगे कि लाहौर, कराची या इस्लामाबाद में से किस सेंटर में आप पेयर होना चाहते हैं। और इसमें तकरीबन 11,500 एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी है, 3,000 एलगैट की फी है। जीमैट जीआरई अगर अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं या एनटीएस लेना चाह रहे हैं तो वो आप देख सकते हैं, उनकी वेबसाइट से डिटेल्स देख सकते जी। और अली, इनका लास्ट क्वेश्चन था अबाउट द फी। दो अराउंड 2 साल की कितनी फी है? जी एग्जैक्टली। हैं। विद इंक्रीज प्रोबेबली ये तकरीबन 5 मिलियन के करीब पहुंच जाएगी। सर अपफ्रंट कितनी पे करनी होती है? ये तकरीबन फर्स्ट मॉड्यूल में आप लोगों का 1 मिलियन के करीब होता है। उसके बाद फिर ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता जाता तो ठीक है। if there are 5 modules, तो तो रफली आप ये समझे कि each module will cost you around 1 million। 1 मिलियन, यानी वो मॉड्यूल वाइज पे करते जाएं आप बेशक। जी अली अरशद, am I right? है। जी जी, होती मॉड्यूल वाइज। ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अनम हुसैन, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन? Ji, hello, assalamu alaikum. वालेकुम I hope सलाम। everyone is doing well. Dr. Ghulam, I had a question कि if we do get to the interview stage, so what kind of questions can candidates expect from the Interesting faculty question, panel? Anam. Okay, look, there are three main areas we always try to assess, and obviously, interview stage is the second stage. It means your file review has been completed, and we have gone through your academic profile, your responsibility, portfolio, job experience, and all that. So when we are basically assessing the candidates for during the interview, we check their clarity, that why are they aiming for executive MBA. Unki clarity is very important. Second, how this executive program, MBA program, is going to add value to their career, and how this particular candidate is going to add value to the existing cohort. उसमें ये कितनी उनकी उनकी नॉलेज में ये कंट्रीब्यूट कर सकेगा। और थर्ड जो चीज़ है, ऑब्वियसली हम चेक कर रहे होते हैं 360 डिग्री एंगल से कि आपकी जो पीपल स्किल हैं, सोशल स्किल्स हैं, आपकी जो बिजनेस एक्यूमेन है वो कैसी है। ये तीन चीज़ें जो यूजुअली हम असेस करते हैं।
Thank you. I hope Yes. that Thank you answers so your much. question, Anam. Yes, Thank you. yes. Thank you. Sabah Rasool, can you please unmute yourself and ask your question? Sabah Rasool, can you hear me? All right, until Sabah's back, Danish, can you please unmute yourself and ask your question? यस श्योर अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. दो तीन क्वेश्चन है मेरे। एक तो ये मुझे बता दें कि अगर आपका रेगुलर एमबीए और ई एमबीए तकरीबन सेम प्राइस के हैं तो हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या इस टाइम हम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। Okay, Danish, there are at least three main differences between MBA and executive MBA. The first is their design. MBA program is offered during the weekdays. It means perhaps you cannot continue your job if you are opting for MBA program. On the other hand, executive MBA is on alternate weekend or generally a weekend-based program. So this is the difference number one. Second, executive MBA is primarily designed for mid-career executives with at least or minimum 6 years of job experience. So it means you have already established yourself in your respective area of functional competence. And now you want to move to the, from mid-career to senior career trajectory. And there you need to have more leadership skills, more generic skills to serve as a GM, as a VP, or even as a CEO or any C-suite, based job. So ये second difference है, which is not the case for MBA. There you don't need a kind of mandatory job experience requirement. It is desirable that you have 1 or 2 years experience, but even a fresh candidate with a bachelor degree, they can apply for MBA program. So these are the two main differences. And the third one is, if you ask me about the cohort or the nature of participants, usually we get enrolled in our executive MBA. So on average there is 11 to 13 years of job experience of my current executive MBA cohort. So just imagine you will be sitting with someone with very experienced skill set, and the other one maybe with the 7 or 8 years of job experience. So these are the three main differences between MBA and executive MBA. जी। और आपका दूसरा क्वेश्चन फाइनेंशियल एड ऑप्शंस पे था, तो हमारे जो एग्जीक्यूटिव एमबीए के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एमसीबी पर्सनल लोन की ऑप्शन अवेलेबल है. Many of them are funded by their respective organizations also. And many of them sometimes, go inform the organization that, we are interested in the program, their learning and development or training and development departments or HRD, or, they fund, this is the route through which they fund their studies, and the MCB personal loan is also available through, चलो क्लियर हो गया, क्लियर ठीक हो है गया। ना? थैंक यू। एक दो सवाल और भी हैं मेरे, अगर इजाजत हो तो, जी इफ टाइम लॉस। जी अच्छा, जी जी एक तो अभी मैंने लेट ज्वाइन किया तो कोई एचईसी की कुछ बात कर रहा था। मैंने अभी ना एप्लीकेशन फिल कर लिया, जस्ट सबमिट करनी है, सबमिट की नहीं है अभी। तो एचईसी से क्या रिक्वायर्ड होगा आपको जो 1 महीना लगता है। वो जो कॉलर थे उनका कुछ इक्विवेलेंस का इशू था. दैट मे नॉट बी योर द केस विद यू. दैट वाज अ वेरी स्पेसिफिक क्वेरी दैट दे हैड. ओके ओके ओके। बट आई डू बिलीव कि एचईसी से अटेस्टेड डॉक्यूमेंट, अली आप थोड़ा सा बता देंगे जो डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन का प्रोसेस है तो रिक्वायर्ड. मैं बता देता हूँ, जो इक्विलेंस की हमने बात की थी, इक्विलेंस का सिनेरियो डिफरेंट है। इक्विलेंस हमें जी चाहिए होती है एट द टाइम ऑफ एवेल्यूएशन। जी जो अटेस्टेशन की बात है, अटेस्टेशन की रिक्वायरमेंट होती है कि अगर आपको चांस मिलता है, एडमिशन ऑफर होती है, तो एडमिशन ऑफर के बाद विद इन 2 to 3 वीक्स हमें आपके वेरीफाइड डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं एचईसी से। तो ओके वेरिफिकेशन डिफरेंट है, इक्विलेंस डिफरेंट। ओके ओके। अच्छा, मेरा दूसरा दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि आपका इंटरव्यू किस स्टेज पे आता है। आपका टेस्ट है मिसाल के तौर पे एलगेट 26 ऑफ अप्रैल, आफ्टर दैट किस किस मंथ में जाके इंटरव्यू वाली स्टेज आती है, और वो क्या एग्जाम के पास होने के बाद आती। मैं थोड़ा अच्छा, सा इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ I can प्रोसेस। answer this question, Alicia, श्योर। if you allow me. Okay, Danish, the first stage is that you need to submit your application with all the requirements. And once the deadline is passed, then all applications basically are gone through a rigorous review process. And generally जो हम जिसको हम file review कहते हैं,
The faculty go through in detail of your all the submitted credentials and everything. And then only those basically who are shortlisted, they are basically invited for the interview. And interview are generally, I mean to say, scheduled in the mid of May. अली अर्शद, इस पे कुछ चीज आप ऐड करना चाहें? जी सर, एग्जैक्टली टाइमलाइन हम लोगों के ऑलमोस्ट सेम है। ओके 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 Thank you. ओके। इस एक आखिरी क्वेश्चन इसमें जो पर्सनल स्टेटमेंट है, हाउ मच रोल डज दिस प्ले इन दिस एडमिशन प्रोफाइल स्क्रूटनी? Quite a lot, Danish, because personally, I don't know you at the time of when I'm reviewing your file and I'm just, shortlisting candidate for the interviews, or even at the time of interviews. It is your, personal statement that is in front of me, and that is basically, giving me a impression how do you look like, and what sort of person you are, and why are you aiming for this executive MBA program? Would you be the right person, right fit for this program? So it is ओके very important because my questions are usually based on your personal statement to see whether there is an alignment and the right fit, between you and the program. ओके ओके। अच्छा, इसी में एक सब क्वेश्चन ये आता है कि मेरा Danish, दिमाग मेरे maybe Danish, we need to take some other questions as well because बस लास्ट all of we क्वेश्चन, wait लास्ट करें. क्वेश्चन सर, Okay. लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, लास्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जी. सिर्फ इतना सा है कि मेरे दिमाग से निकले हुए आंसर्स हैं, अगर मैं सिर्फ एआई से कहता हूँ कि उसको ड्राफ्ट कर दो थोड़ा बेहतर तरीके में, तो क्या एआई डिटेक्शन टूल या एआई स्क्रूटनी मुझे एप्लीकेशन रिजेक्ट तो नहीं करा देगी? देखिए, it can happen in both ways. उसका रीजन ये है कि if you are 100% relying on AI, but at the time of interview there will be only you and yourself as an original person, and if there is a kind of a contradiction or misalignment between what you have written and submitted with the help of AI and what you are basically looking like and responding to my questions, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी. अच्छा, लेकिन अगर मैं और मेरी एआई वाले आंसर्स मैच कर रहे होंगे फिर? देखिए, कुछ जॉब हमारे लिए भी आप छोड़ दें, अगर ये इतना आसान हो तो फिर हम एकेडमिया में किस लिए बैठे हुए हैं, इफ वी कैन नॉट डिटेक्ट दिस. ठीक है, thank you so much. Sabah Rasool, can you please unmute yourself and ask your question? Ji, Assalamualaikum. Sorry about earlier. I think I had a lag on my side with my network. Assalamualaikum, everyone. I wanted to ask, basically, if I'm applying for this program and I have a background in terms of my studies from a completely different field, which is medical sciences, and but my work experience reflects, business and administrative, and that's the sort of field that I am trying to pursue in terms of my future, and which is why I want to apply for this program. What is the scrutiny based on previous academics and work history? Okay, Sabah, again, very interesting question. Look, Sabah, we need a 16 years of education, and we do not specify that the education must be in a business or non-business area. If you, I mean to say, if I give you, I mean to say, some examples of our current or some previous cohorts, we always have a great and intriguing diversity. I have people from fashion background. I have people from medical background. I have people from a law enforcement department or agencies. And then 45 to 50% they are from engineering background. So only around 20 to 25% people, they have the prior business background in term of commerce, finance, accounting, or a simple business degree. So this program has been designed in such a way that all those who want to move to the, in the organization ladder upward, irrespective of their areas of competence or functionality, we need to develop their skill set, especially in terms of leadership, and give them a kind of better understanding and skills of having some financial understanding and overall business understanding of the business domain. So there is no such requirement of having a kind of business background prior in your academic portfolio. ऐसी कोई requirement नहीं है. Okay, thank you. The reason why I ask is because I understand that you have another master's program, which is more designed towards healthcare administration, right? Yes. And that was my concern because even though I do have an administrative experience, it is in the healthcare on the healthcare side.
but that's not what I'm trying to pursue. So I don't know if I should be more pushed towards that. I am actually trying to go more towards the organizational leadership, and that's the skill I'm trying to hone. Okay, Sabah, how much is your experience after your graduation? My experience. So Yes, job experience. I have worked in the clinical side, but I've also worked in the administrative of a medical college, and also currently I'm working on the business administrator side of a medical organization. No, total number of years after graduation. I've had a 6 years of experience. Okay, so you are, eligible for executive MBA program. Look, if you ask me to just make a comparison between our specific program, you were just talking about HMI. It's more specific program. On the other hand, in the orientation or starting, I mentioned executive MBA is more of a generic, program. We do not, I mean to say, specifically build or enhance any particular skill set, but more generic skill set that you can move in the organization hierarchy, more like a JEM or a kind of, C-suite, designated post. So you're fine for this program. Okay, thank you so much. Thank you. Welcome. Thank you. Ariba, can you please unmute yourself and ask your question? Ariba, can you hear me? Yes. Assalamualaikum. Walaikum salam. Ma'am, I want to get information about score requirements if I want to take GMAT, GRE, or NTS instead of LGAT. Okay. Ali, do you have any score requirements that can Sure, be sure, sure. shared? For GMAT GRE, there is no minimum score requirement, but if you are planning to take NTS GAT General, you need to score at least 50 to be eligible to apply. Okay. Thank you. Ariba, I hope that answers your question. Thank you so much. You're welcome. Iftikhar Hussain, can you please unmute yourself and ask your question? Iftikhar Hussain, you have unmuted, but we can't hear you. All right, let's move on, and Iftikhar can ask his question a bit later. Fahad Javed, can you please unmute yourself and ask your question? Assalamualaikum. Thank you so much. Welcome. Am I audible? Yes. Okay. Thank you so much for arranging this counseling session. I have two specific questions. थोड़ा सा गुलाम अली साहब ने पहले किया है बात एग्जीक्यूटिव एमबीए वर्सेस एमएस इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट एंड इनोवेशन. I need a little bit more elaboration on that. I have my background in healthcare administration and I have 10 plus years of experience. And I am watching myself in next 5 years in healthcare administrative field as well. So what option would be suitable for me? Should I opt for the healthcare management and innovation or should I go for the executive MBA? Okay, Fahad, first tell me how much job experience do you have after completing your grad degree? It's 10 plus years. Okay, so it means you are eligible for both programs. Look, it is a kind of more of a personal choice, depending on your future aspirations, where you want to go. But I can only, I mean to say, differentiate both the programs based on, to what extent they are specific, or maybe you can say that, vertically focused or horizontally focused. When I say horizontally, it means you're expanding your skill set and you are trying to basically understand the business as a whole, where you will be developing your skill set in supply chain, operations, marketing, leadership, people management, and heavily, number driven or data driven decisions. So executive MBA like this is more generic. So if you are aiming to move toward more generic position, more like a C-suite position where you don't need to have a specific skill set or a kind of a competence in one area, rather you need to have a broader understanding of the business, then executive MBA is the right choice for you. But if you want to have a kind of hardcore specific skill set in only one domain, maybe health management or supply chain or any other, then these MS programs can be a good choice for you. Okay. If I opt for this executive MBA, what position I can aim for in future in the field out there? Look, if you have already spent 10 years in a particular area, it means you have established yourself in that area.
And now what you need to basically, I mean to say, learn first and then practice is more like the broader understanding of the business. So maybe you can expect and hope that in the next 5 to 10 years, you will be reaching to any C-suite position, depending on your interest Oh, and obviously the availability of that particular job role or position in your organization. Or maybe you want to switch to another organization. Because mhm. look, generally what individuals, they try to get out of this executive MBA, along with learning, along with experience, along with knowing all the skills of broader business domain, they also get access to the rich network of executive MBA. So sometimes that network is valuable for them to switch from one particular industry to another industry. Some of them, they may, I mean to say, end up starting their own business and then capitalizing on that same elite network. Mhm. Okay. Thank Thank you. you so much. Thank you. Dr. Ryan, before we move forward, there is a question in the chat which I think I would like to refer to you. How much is executive MBA relevant to government officials in their mid-career or administrative positions? Very much. The reason for answering this question is that, always I have 2 to 3, I mean to say, participants from, government agencies, from law enforcement, even from military background, or, some police departments, or even some hardcore public sector organizations, because they know that once they are retired, or maybe if they want to basically lead any particular organization, this is the kind of a degree they need, along with their specific skill set. So I can recall many of my ex-participants or alum who actually were, I mean to say, uh, related to a particular domain in a public sector organization. But maybe after their retirement, they were given a kind of responsibility to lead a particular organization, department, or a kind of organization. So their generic skill set, which they acquired through this executive MBA program, was basically quite, critical to their success. Yeah. Thank you. Iftikhar Hussain, can you please unmute yourself and ask your question? Iftikhar, आपकी फिर आवाज नहीं आ रही for some reason. I can see that you have unmuted, but we can't hear you. Can you put your question in the chat? I'll अब आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है जी. हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम. Basically, I have done BTech honors in mechanical engineering, and I have probably 15-year experience in after degree. I can मैं चेक करना चाहता हूँ एलिजिबिलिटी, और इसमें मुझे मतलब कि टेस्ट इंटरव्यू के लिए क्या करना चाहिए, और दूसरा सेकंड ये है कि क्या मेरे लिए कुछ ऑनलाइन क्लासेस का आपके पास है तमाम, या सिर्फ क्लासेस ही लेनी पड़ेंगी मिड वीक में? Okay, Takar, जहाँ तक बात आपकी, since you have a kind of BE engineering degree, right? नहीं, सॉरी, बीटेक ऑनर्स इस ये पहले बैचलर इन टेक्नोलॉजी. Did Acha, you add some? maybe Ali Arshad can answer this question first to check your academic eligibility. Yes, BTech honors is equivalent to 16 years. Okay. Yes, So yes. Iftikhar, I get it. so it is confirmed by Ali Arshad, you are eligible academically to apply for this program. जो अच्छी चीज आपके लिए could be a kind of very encouraging, evidence or fact is that almost 40 to 50% cohort of executive MBA, mostly in the last couple of years, was comprised of engineering background people. Because usually होता है क्या Okay, है कि engineers are really good in term of dealing with hardcore machines. So एक जगह पर आकर ना फिर वो of course. bottleneck आ जाती है, where they need to basically Yeah. lead the organization as a GM or maybe as a VP or as a kind of CEO. तो उस वक्त they need to have more generic or broader understanding of the entire business domain. And there comes the importance of executive MBA in this way. Okay. Okay. तो अच्छा, सेकेंडली, अब क्योंकि बाद दफा ये हमारी जो सैलरीज होती हैं वो इसके काबिल नहीं होती कि हम एडमिशन फीस और बाकी चीज़ कर सकते हैं, तो इसमें कोई स्कॉलरशिप का कोई है सिनेरियो? और सेकेंडली, ऑनलाइन क्लासेस का कुछ जी. है, कोई सीन या नहीं? Acha, Iftkhar, there are no options of online classes. We are, I mean to Okay. say, very rigorous in terms of our pedagogy, and that is the kind of, the main feature of our executive MBA program. It's very rigorous, very robust program. You need to be in person.
हाँ, कुछ कोर्सेज हम ऑफिशियली बाय डिजाइन ऑफर करते हैं, विच आर ऑनलाइन कोर्सेज. सो देर आर 6 ऑनलाइन कोर्सेज along with the 15 in-person courses. तो वो those I mean to say courses are the part of your degree program in term of credit hours. वो by design online है. But rest 22 months precisely or over 2 years you need to be in person attending all the classes. और सेकंड बात जो आपने कही है विद रिस्पेक्ट टू स्कॉलरशिप, वी डोंट हैव एनी स्कॉलरशिप इन आवर एग्जीक्यूटिव एमबीए program. There is only one option, that is you can apply for MCB loan. And mostly what happens whenever somebody is I mean to say has secured the admission in our executive MBA program, industry knows the importance and the prestige of this program and know that getting admission or getting yourself enrolled in this program is quite a kind of achievement. So they are mostly happy to fund your degree program, so you can check with your employer. And so there is no scholarship available for executive MBA other than MCB loan. But there is one scholarship that is available only for women, that is high merit scholarship. And under that scholarship, 50% I mean to say reduction in the fee is offered to female candidates. जी So Aisha, you Okay. want to मैं इसकी elaborate this? जी Gigi, जी आई please. वुड जस्ट लाइक टू ऐड कि ये जो वुमेन स्कॉलरशिप इनिशिएटिव है, इसके लिए आपको जो अगर इफ देयर एनी फीमेल एप्लीकेंट्स, you don't have to fill anything, any other form, or you don't have to opt for it. By default, all of the applications that are submitted by the females are considered for the women scholarship initiative on, it's on high merit, so the university then makes a decision. I'm जी just इफ्तिखार going कुछ to कहना अच्छा चाहते थे आप? मैंने लास्ट में मैं एडमिशन जो एडमिशन है ऑनलाइन, वो मैं काफ़ी टाइम ट्राई कर चुका हूँ, वो ऑनलाइन सबमिट नहीं हो पा रहा मेरा. So अच्छा maybe if there is any हाँ specific सब problem, you इशू can share the screenshot with Ali Arshad. ओके. आप जी Ali वैसे Arshad नो, भी please बता बताएं. सकते हैं, वर्बली भी बता सकते हैं क्या इशू फेस कर रहे हैं आप. इशू है कि उस पे मैंने पर्सनल एकेडमिक एक्सपीरियंस और ये सारी चीज़ें पुट अप कर दी हैं. उसके बाद 2-3 सेक्शन है मेरे ख्याल में, वो टेस्ट मार्क मांग रहे हैं. उसमें टेस्ट मार्क अब मैं कौन से डाल सकता हूँ? वो तो अभी कोई टेस्ट टेस्ट ऐसा हुआ आप नहीं है. कौन सा लेना चाह रहे हैं? जी, आप कौन सा टेस्ट लेना चाह रहे हैं? यही मुझे समझ नहीं आ रही कि वो कौन सा टेस्ट मांग रहे हैं, कि कौन से मार्क्स मांग रहे हैं वो. मैं आपको बता देता हूँ खैर साहब, सबसे पहले तो आप वेबसाइट एक दफ़ा गो थ्रू करें, उसमें आपको टेस्टिंग ऑप्शंस मिल जाएंगी. क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं तो मैं बता भी देता हूँ. आपके पास 4 ऑप्शंस हैं: जीमैट, जीआरई, एनटीएस गैट जनरल और एलगैट. आप जो ओके भी ओके इसमें ओके. से टेस्ट देना चाहते हैं, लेट से एलगैट आप देना चाह रहे हैं, जो लम्स का अपना टेस्ट है, 26 के लिए प्लान हुआ हुआ है वो टेस्ट. अगर आप वो देना चाहते हैं, टेस्टिंग सेक्शन के अंदर सिंपली आपने रजिस्टर के टैब को क्लिक करना है. लाहौर, कराची, इस्लामाबाद तीनों सेंटर्स में से जिस भी सेंटर में आप वो टेस्ट देना चाहते हैं, आप वो क्लिक करेंगे और उसको सेव करेंगे. कोई स्कोर सबमिट करने की ठीक जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपने वो टेस्ट तो दिया ही नहीं. हाँ जी, ठीक है. ठीक है सर, थैंक यू. Thank you. Thank you. Okay. Fahad Javed, Hafiz Irfan Mio, can you please unmute yourself and ask your question? Hello, Assalamu alaikum, ma'am. Walaikum salam. Am I audible? Yes. I am a government servant having 15 years experience in public sector. I have my academic background is social sciences. Is it feasible for me to join the executive MBA, and what whether it is mandatory to have the background of business or data or something like that degrees? Social sciences background and having more than 15 years experience in public sector, what do you think the whether I'll be able to continue this degree, or it would be difficult for me to continue it? Okay, Hafiz, thank you so much for this question. Look, we have already mentioned we don't specify any grad degree. You are fine with this social sciences degree, and with 15 years of job experience. So I don't see any problem. But the important part is, if you are basically shortlisted for the interview, I will be asking you a question that why are you looking for this executive MBA program? So you need to get a kind of clarity that how this program is going to add value to your current career. तो और इससे पहले भी मैंने कहा कि आई ऑलवेज हैव सम पार्टिसिपेंट्स विद सोशल साइंसेज बैकग्राउंड, विद फैशन डिजाइनिंग डिग्री, और एनी
humanity and social sciences, grad degree. So there is no problem with this. Thank you. Sohail Afzal, can you please unmute yourself and ask your question? जी थैंक यू मैम। अस्सलाम वालेकुम गुलाम अली साहब। वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल आपसे ये है, थोड़ा डिफरेंट सवाल है ये। आपने इसको इस पर्सपेक्टिव में नहीं लेना कि जो सवाल मैंने आपसे इंटरव्यू में पूछना है वो आप आज मुझसे पूछ रहे हैं। मैं इस वक्त ये सोच रहा हूँ कि आप इस वक्त एक सेलर हैं और मैं एक कस्टमर हूँ। सो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि आप अपनी प्रोडक्ट किस तरह से मुझे सेल आउट करते हैं। मेरा सवाल स्पेसिफिकली ये है कि देखें, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड बीइंग हैव डन 4 years ऑफ आर्टिकल्स, डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, ठीक है, उसमें थोड़ा कुर्सियों का भी फर्क होता है कि जब ऑडिटर की कुर्सी पे बंदा बैठा होता है तो और नजरिए से और पर्सपेक्टिव से चीजों को देख रहा होता है। ठीक है, देन आई गॉट इंटरनल ऑडिट एक्सपीरियंस एज वेल, देन आई गॉट पोस्ट आर्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ 9 years इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। तो पूछना ये है, फिर अगर मैं अपनी स्टडी की बात करूं तो जो केस स्टडी की आप बात कर रहे हैं वो केस स्टडीज वी ऑलरेडी ऑलरेडी बीन थ्रू इट। तो वी ऑलरेडी बीन थ्रू ICW केस स्टडीज एज वेल फॉर आवर प्रिपरेशन फॉर MSA 2 और MSA 1। मेरा सवाल फिर ये है कि हाउ EMBA विल ऐड वैल्यू, वो कौन से ऐसे पर्सपेक्टिव्स है, ये मेरी ऑलरेडी जो मेरी स्किल्स हैं उनको कैसे शाइन करेगा, कैसे जो है ना ऐड वैल्यू करेगा उसके अंदर, फॉर माई स्पेसिफिक I got the, बैकग्राउंड। I got the point. Okay, Suhail Afzal, I can basically relate your question with the past experience of dealing and interacting with the CFO with almost similar background like you have yourself, right? तो जब after 2 years when they graduated और वो कहते हैं कि okay we were very convenient and at ease when there were questions related to, or when there were subjects or course related to accounting, finance and all, auditing and all that stuff. But when there were courses with respect to supply chain, with leadership, with teamwork, or with marketing, with AI, so these were the courses which basically broaden our understanding. मैं इसके ऊपर थोड़ा सा अपने सवाल को थोड़ा सा ट्विस्ट करूंगा। मेरा सवाल ये है कि देखें, जो प्रीवियस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे डेफिनेटली दे लैक दो स्किल्स दैट यू आर मेंशनिंग हियर, लाइक HR स्किल्स, पीपल मैनेजमेंट स्किल्स, या लीडरशिप स्किल्स, या सॉफ्ट स्किल्स, या डाटा एनालिटिकल स्किल्स। ये वो गैप था जो हमारे इंस्टीट्यूट ने भी फील किया और उसने उस गैप को फिल इन कर दिया बाय चेंजिंग देयर सिलेबस, बाय करिकुलम चेंज कर दिया, टेस्टिंग मेथड्स चेंज कर दिए, उसको इम्प्रूव कर लिया। फाइन, आई जस्ट क्वालिफाइड लास्ट ईयर इन जून। मुझे ये लगता है, और दूसरा इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मुझे पर्सनली ये लगता है कि स्ट्रेटेजिक बिजनेस मैनेजमेंट इज इन माय ब्लड एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज वन ऑफ द रीजंस दैट आई एम परसुइंग EMBA। तो मुझे तो ये सारी चीजों का टेस्ट है। ठीक है, सो वो उस पर्सपेक्टिव में आप कैसे, लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन वी डू केस अच्छा स्टडीज, उजमेल, केस we can स्टडीज, go तो in उसमें ही detail. सारा कुछ कवर्ड है ना कि हमने HR के issues को देखिए कैसे मैनेज करना है, इस Suhail, I पर्सपेक्टिव से can, जा रहा हूँ। look, I need to basically take questions at the moment. I cannot basically take these kind of lengthy discussion. But मैं क्विक आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कर देता हूँ ना, श्योर सर। कि देखिए आपका एक डोमेन है जो है कि बेसिकली लेट्स सपोज CA का या CFO का, लेकिन अगर आप कहें कि जी मेरे पास उतनी ही एक्सपर्टीज है जो कि एक CHRO की भी है या चीफ स्ट्रेटेजी जो ऑफिसर है उसकी भी है, रिमेंबर यू विल बी वर्किंग इन ग्रुप्स and that the primary pedagogy is case based teaching. We don't give any lectures. There are always DRs of around 30 minutes before the start of the class, जिसमें एक CHRO भी आपके साथ बैठा होगा, एक चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर भी आपके साथ बैठा होगा, और एक इंजीनियर भी आपके साथ बैठा होगा। एंड व्हेन देयर इज अ केस स्टडी, कुछ केस स्टडीज में तो आपकी एक्सपर्टीज जो है वो मतलब शाइन आउट करेंगी, वो लीड कर लेंगी। लेकिन जहां पे बात आएगी पीपल मैनेजमेंट की, स्ट्रेटजी की, मार्केटिंग की, तो द समवन हु इज हैविंग अ काइंड ऑफ सी स्वीट स्किल सेट इन दोज एरियाज, मेरे ख्याल में वो बेहतर आपको गाइड भी कर सकता है और आपको हेल्प भी कर सकता है। So it's not about the faculty, it's about the kind of, the colleagues द and the team एनवायरनमेंट, द members you get in इकोसिस्टम the यू आर team. रेफरिंग टू। हाँ, ecosystem, exactly, the ecosystem. So there is more learning through, that DRs पीयर लर्निंग, and यू discussing टॉकिंग the अबाउट case पीयर study. लर्निंग। Exactly. तो ये difference है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली राइट, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया, Always एंड आई एम welcome. सॉरी इफ आई टुक मोर टाइम। No issue. Thank you. Before we move on, I just like to remind everyone that 14th of April is the is the date for the application submission. Please do not miss that. You have one extra day to upload your supporting documents, which is 15th April. Um,
there is no extension of the admission deadline. So it's very important to get your application in at the right time. So I re-emphasize this point of Aisha is very, very important that Yes, you should not miss the deadline. What I suggest you to try to basically complete and submit your application by 13th. Don't wait for the 14th. yes, We are living in Pakistan. You have no idea that when internet is going to get yes, offline yes. and there will So be no extension. yes. Anam Hussain, can you please unmute yourself and ask your question? जी okay, I had a question about the documentation जो हमने upload करनी है. So जो मेरी जो degrees हैं, they are currently with the HEC, and I'm not sure when I'm going to get them back. It might be after the 15th as well. So do we get an extension on that? Ji, Ali? Anam, do you have scanned copies of these documents? I do, but वो unattested हैं. It's But I okay. do have scanned copies, yes. Okay. You can upload unattested documents. Okay, But at the okay. time of interview, we will require your attested documents. Okay, okay. ठीक है, thank you so much. Okay. Thanks, Anam, and good to see you in the session. Fahad Javed, can you please unmute yourself and ask your question? Thank you so much. Keeping in mind the amount I have to pay for the 2 years EMBA program, I would like to learn more about the financial assistance option. You have the scholarship for women. I really appreciate that, but I would like to see others to come up and come forward with the options for the males as well. So is there any option if I can, avail the opportunity of getting this EMBA subject-wise or semester-wise as per my financial settings? Ji. Ali, can you give our audience a little brief on how on the payment format, as in when the fee have to be paid, and also share some information on the MCB student loan? Okay, they need to pay module wise. If they got admitted to the program, the first voucher will be around 1 million and it will be adjusted accordingly for the next 4 modules. Secondly, the only available option is student personal loan, which is MCB based. MCB is taking care of this. Applicant needs to highlight it in the biographical section of online application that they want to avail the MCB loans facility. That's it. There is no application or other thing. अच्छा इसमें मैं अफवाद एक चीज ऐड कर दूं generally what is my experience with these candidates who are basically struggling with their financial constraints. So most of them, once they got the admission or got a kind of letter or offer letter to join the program, when they present that offer letter to their employer, most of the employers generally they are happy and encouraging to support your program. Maybe a kind of financial or partial funding can be obtained by or from your employer, and then partial amount perhaps you can self-finance. So you can look for this option as well. Oh, okay, thank you so much. But Thank you. we are living in Pakistan and we don't have culture to support, people to go ahead. But thank you so much. Thank you. Thank you. All right. So we don't have any raised hands right now, but so please, if you have any questions, we have a few minutes left. Please, you Aisha, raise if your you can hand. go through the questions, I Okay. mean to say written in the chat box, if there is any question that I need to address. We do have a question in the chat from Rida. How Thank you. the Okay. executive MBA can enhance for career building, as I have done MS Finance and want to start good career. Okay, Rida, look, interestingly, I have a candidate who got PhD in textile engineering and now working as a VP. Still, that person is getting an executive MBA degree because the skill set that generally that you get, Fahad is here and many other people who I may not, I mean to say, see their name and designations if they are enrolled in the program. You will be sitting in a kind of a group with the C-suite skill set or boardroom skill set, and that will basically add value to your learning apart from the learning that will happen in a class. Ji Sharyar, any other question? All the other questions have been answered. We have still 10 minutes to go. If anyone has a question, please raise your hand or you can type in the chat. Hello, this is Imran. Can you hear me? Yes, Imran, I can hear Yes. you. Okay, I have a couple of sweet questions to ask.
The first one is how competitive is the admission process? I mean, how many people, how many professionals normally apply for this program, and how many get through the admission process? Okay, Imran, honestly speaking, this is a kind of a state secret. I cannot precisely tell you the numbers, but it is a highly a competitive program. Okay. One more question. Okay, that we can discuss later on, of course. Sure. This is regarding the international tours or the international exposure. So, are there international business trips or study tours, or Yes, there is. is it Yes, international? Imran, there is a specific, I mean to say, course. We call it as globalization module, which is 3 credit hour course as a part of your degree. And under this course, the students go to the US Silicon Valley, and it's very well organized trip. It's not a kind of recreational trip. It's more academic and learning based trip. You go to the Silicon Valley. It is very well organized. You get a mentor there. It is around 6 to 8 days, sometimes 10 days, and you visit different high-tech industries there. You personally experience their working, their functioning, and the different domain of business. So this is a kind of international aspect of this program. And obviously, those who cannot go there, there is a kind of parallel domestic module. And under that module, they go to Karachi and they visit around about 12 to 14 different organizations. Good to know. One more question related to this. Who's going to bear the cost of this US tour that you just mentioned? I mean, It should be. you mentioned It is self-financed. It is okay. self-financed. It is self-financed. You generally get funding from your own organization, or you basically self-financed it. We don't force people to go there. Those who cannot afford, they can go to the, I mean to say, parallel domestic module. And mostly, almost 40 to 50%, they opt for this option, and generally their employers are happy to pay. Good to know. One more thing. How many days tour is this that we're talking about, the US one? It's roughly around 8 to 10 days. It's 1 week for basically the as per the program design, and obviously 2 to 3 days. Some people they take these 2 or 3 days extra, and it is very, I mean to say, well coordinated. We will be providing you all the support, all documents which you need to basically apply for the visa, and there you will be welcomed and received by a mentor, and then it is the responsibility of mentor to arrange your all accommodation and everything. But obviously the whole fee or the cost will be borne by yourself or I mean to say your organization. Again, this question related to the previous one. How many people do you think? I mean, not think you must know that how many people who apply for this US visa, and out of them, how many get the US visa through your program? Last time around 40% students they went there, but I cannot basically precisely tell you because some of those participants already had a valid visa. Okay, so anyone who is applying for the visa, I mean, interested going there for the tour, so they normally get the visa through this program. Is that what? Yes, generally it happens. But obviously, this is something I cannot answer. US consulate, they need to answer this question, and it will be depending on the geopolitical situation as well. Sure, got it. Thank you. Okay. So Abrar, maybe I can take question from Abrar first. जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा सर, मुझे वालेकुम लास्ट सलाम में एक अब्रार। क्वेश्चन ये बता दीजिए कि एलमैट में मैं अपीयर होना चाहूंगा तो उसकी प्रिपरेशन के लिए को मुझे थोड़ी सी गाइडलाइन दे दो। थैंक यू। देखिए, आई थिंक एल गेट का कोई सैंपल या कोई डिटेल तो मेरे ख्याल में ऑलरेडी वेबसाइट पर होगी। अली जी सर, वर्बल, क्वांटिटेटिव, एनालिटिकल 3 सेक्शंस है और ये जीआरई बेस्ड ही होता है मोस्टली, तो कोई भी लेटेस्ट वर्जन जीआरई का हेल्पफुल है प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू सर। दानियाल गुजर, और कैन यू लिंक प्लीज भी अनम्यूट चैट में मैं योरसेल्फ, शो कर रहा हूँ। लास्ट योर क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मैं लास्ट ईयर भी मैंने ट्राई किया था। मेरा कोई 12 इयर्स का एक्सपीरियंस है एडिबल ऑयल इंडस्ट्री का ना, तो एक ड्रीम है। लेकिन एक तो आपका जो ये प्रोसेस है, ऑनलाइन प्रोसेस बड़ा लेंथी है और कम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड। और दूसरा ये मुझे ज़रा काइंडली क्लियर कर दें कि एल गैट ज़रूरी है या एनटीएस गैट की डेट है अभी, वो भी उसमें अपेयर हो सकते हैं। अली और तीसरा अच्छा, तीसरा मेरा क्वेश्चन है, सॉरी, जो इसकी आपने फीसेस वगैरह इनकी बताई हुई हैं, अराउंड पर ईयर जो है 2.4 मिलियन है, ऐसी है इसकी? अच्छा, आई कैन आंसर दिस क्वेश्चन द फर्स्ट पार्ट। अच्छा, दानियाल, जनरली हमने कहा कि अराउंड 5 मिलियन जो है वो आपकी कॉस्ट है। सो अपफ्रंट फॉर द फर्स्ट मॉड्यूल उसमें आपकी 1 मिलियन कॉस्ट चली जाती है। तो उसके बाद जो जो फर्स्ट ईयर में है वो 3 मॉड्यूल्स हैं, तो 3 मॉड्यूल्स की रफली कॉस्ट 2.5 टू 3 मिलियन चली जाएगी इन द फर्स्ट ईयर। मजीद ठीक जो है अली अरशद आपको गाइड कर देंगे।
अच्छा, बाकी टेस्ट की जो बात कर रहे हैं दानियल, एनटीएस की तो डेट्स गुजर चुकी हुई है। एनटीएस की फाइनल डेट्स गुजर गई हैं। अब आपके पास जीमैट, जीआरई और एलगैट के ऑप्शन रह जाती है। एलगैट लाम्स का अपना टेस्ट है और उसकी रजिस्ट्रेशन आपको 14 अप्रैल से पहले करनी है एप्लीकेशन सबमिशन के साथ ही। बाकी एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप कुछ कह रहे थे कि कहीं पे आपको कुछ समझ नहीं आ रही, वो प्लीज बताइए। जी, एप्लीकेशन के हवाले से था, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है। मैं लास्ट ईयर भी ट्राई करता रहा हूँ ना, तो वो अपडेट होने से पहले, सेव होने से पहले ही वो दोबारा वापसी हो जाता था। मतलब अजीब सी उसका थोड़ा सा दानियल, मुझे ये गाइड। सिर्फ उस फॉर्म में होता है कि या तो आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत लो है, या आप जी एक सेक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हैं और उसको सेव नहीं कर रहे। प्रोसेस ये है कि जिस तरह लेट से फर्स्ट सेक्शन है बायोग्राफिकल सेक्शन, प्रोसेस ये है कि जी। आप उसको कंप्लीट करके उस सेक्शन को सेव कर दोगे। मतलब ऐसा नहीं ठीक है कि आप बायोग्राफिकल को मिड में छोड़ोगे और आप वापस आके उसको अटेम्प्ट करोगे तो वो वहां से आपकी डिटेल्स नहीं होंगी उस वक्त अवेलेबल। जिस सेक्शन को ठीक आप है। अटेम्प्ट कर रहे हो उसको कंप्लीट करके आप सेव कर दोगे तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपका डेटा नहीं सेव होगा। ठीक है। और सर लास्ट क्वेश्चन जो मेरा है ना, जो फाइनेंशियल एड तो है नहीं इसमें, अगर जो एमसीबी के थ्रू लोन है तो इसी एप्लीकेशन में ही ऑप्शन है उसके लिए अप्लाई जी, करने का भी, फर्स्ट या अलग से है? फर्स्ट फर्स्ट सेक्शन है बायोग्राफिकल का। वहां पे सिंपली एक ठीक। क्वेश्चन है कि डू यू वांट टू अवेल एमसीबी लोन फैसिलिटी। उसको आप यस करेंगे और अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे। आपको एडमिशन ऑफर होता है तो फाइनेंशियल रिप्रेजेंटेटिव आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपको कनेक्ट करा देंगे एमसीबी के साथ। ठीक है। और जो आपकी वीकेंड क्लासेस हैं सैटरडे संडे, ये सेकंड टाइम में है? नहीं दानियाल, ये आपकी फुल सुबह आपकी 8 बजे से लेकर समझे रात 8 बजे तक आप हमारे साथ होंगे, फ्राइडे एंड सैटरडे। फर्स्ट ईयर देर आर 10 consecutive days दैट यू नीड टू बी इन पर्सन, वो फिर आपको आपका ऑफ लेना पड़ेगा। और इसी तरह से सेकंड ईयर में भी आपको 10 consecutive days के लिए आना पड़ेगा। फिर आपको ये भी पता है कि इफ़ यू आर गोइंग फॉर इंडस्ट्रियल मॉड्यूल तो उसके लिए भी आपको 1 वीक जो है वो छुट्टी देनी पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू सर, मेरी यू आर क्वेश्चन वेलकम। कंप्लीट हो गई। Dr. Rang, would you like to give some closing remarks? We have 2 minutes to go and we don't have any hands raised. Okay, so thank you so much everybody for taking time out of your busy schedule and joining this counseling session. I'm glad to see you, and I try to basically answer some of the most commonly asked questions. My simple advice is for you that be very sensitive to the deadline, because there will be no extension in the deadline. Try to basically submit your application at least 1 day prior to the deadline. So if anything goes wrong with your internet connection or any other issue, तो वो आपका जो है वो डेडलाइन मिस ना हो। Second, if you are basically shortlisted for the interview, be yourself, I mean to say, genuine, original. Don't try to pretend something that you are not. Have clarity that why are you looking for this executive MBA program. मुझे किसी ने कहा था ना कि just imagine that, being the program director, I'm more like a kind of a seller, and the participants are more like client, and I will be offering them services. The case is a bit different. We don't offer this executive MBA program only to make, I mean to say, admissions or enroll people to our program. We always assess whether there is a right fit between the aspirations or the career trajectory and the executive MBA program. ये एग्जेक्टिव एमबीए प्रोग्राम आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल है और आप इस प्रोग्राम के लिए कितने अलाइंड हैं, ये दोनों क्वेश्चंस हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सो इफ देयर इज अ काइंड ऑफ अ मिसमैच, वी बिलीव दैट दिस प्रोग्राम इज नॉट द राइट चॉइस फॉर यू, तो हम आपको मना कर देंगे। या हमें लग रहा होगा कि यू आर नॉट द राइट फिट फॉर दिस प्रोग्राम, तो उस सूरत में भी आपके चांसेस कम हो जाएंगे। बट द बेस्ट इज दैट वी नीड टू गेट अ काइंड ऑफ विन विन सिचुएशन आउट ऑफ दिस. You need to basically add value to this program, and we need to add value to your career trajectory. So this is my simple message for you. So I wish you all the best, and I hope to see you soon as a part of this program, inshallah. Sure, Thank you, inshallah. Dr. Rang. So if there is no more question, we can end this session. I mean, Chat में if you have few seconds, I have one question. Since I know a lot about sure, this, Imran. yeah, I know a lot about this program already and ready to embark on journey. So these might be the foolish question, look to other people. So because we all are professionals and having, sitting somewhere in the mid management, and there is a lot of work pressure as well on us. So, I mean, how would you assess if I won't be able to do, I mean, if I have to spend 2 days, 3 days a week with you, so how much work I have to do, I have to take at home or to my office to do to complete the program?
A lot of work, Imran. It's very rigorous program. I think it's better to ask this question to those who have already gone through this program. It's a robust program, very rigorous program, demanding program. Next 2 years would be very challenging for you. This is the kind of unique feature of this executive MBA program at LUMS. वो आपको assignments मिलेंगी, आपको project मिलेंगे, group work मिलेगा, but the best part is that you will get a kind of equally competent cohort and peers who will always be learning from you and helping you to learn from them. Okay, great. So, but we have to study a lot. I mean, this will be A a kind lot. of time study. Yes. हाँ जी, a Okay. lot, and it is basically adding value to your experience and getting others experience, adding value to your career. यहाँ पे वो रट्टा और वो ऐसी चीजें नहीं है. It means the entire program is based on cases. So you need to basically solve case with the help of your peers and teamwork, and then bring different perspective to the case. And in case study, there is no right or wrong question. Every answer, if you can defend with evidence, with data, is acceptable. Great. Good to know. Thank you so much. Always welcome. Thank you everyone for your time. Allah Hafiz.